जय श्री माता जी। आज ऑनलाइन उपस्थित विश्व के सभी सहयोगियों का सायंकालीन ध्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम श्री माता जी को वंदन करके सामूहिक बंधन लेंगे। वी विल बो डाउन टू श्री माता जी एंड टेक कलेक्टिव बंधन। तीन महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र।
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नाड़ी संतुलन हेतु अपना बायां हाथ गोदी में, दाहिना हाथ पृथ्वी माता पे। फॉर बैलेंसिंग विल कीप आवर लेफ्ट हैंड ऑन लैप, राइट हैंड ऑन मदर अर्थ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमारी ईड़ा नाड़ी पर श्री महावीर जी की शक्ति जागृत कीजिए। श्री माता जी, प्लीज क्लेंस अवर ईड़ा नाड़ी एंड मे वी हैव प्योर डिजायर। श्री माता जी, प्लीज एस्टैब्लिश श्री महावीर देवता क्वालिटीज इन अस। धीरे से अपना दाहिना हाथ गोदी में लेंगे, बायां हाथ आकाश की ओर, राइट हैंड ऑन लैप, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स ईथर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध कार्यशक्ति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमारी पिंगला नाड़ी पर श्री बुद्ध देवता जी की शक्ति जागृत कीजिए। हर होलीनेस श्री माता जी, प्लीज क्लेंस आवर पिंगला नाड़ी एंड मे वी हैव प्योर पावर ऑफ एक्शन। श्री माता जी, प्लीज एस्टैब्लिश श्री बुद्ध देवता क्वालिटीज इन अस। धीरे से अपना हाथ गोदी में लेंगे। विल टेक आवर बोथ हैंड्स ऑन लैप। संपूर्ण चित्त सुषुम्ना नाड़ी पर। कंप्लीट अटेंशन ऑन आवर सुषुम्ना नाड़ी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। श्री माता जी, बाय योर ग्रेस प्लीज क्लेंस अवर सुषुम्ना नाड़ी एंड मे वी हैव कंप्लीट बैलेंस स्टेट।
चित्त सहस्रार चक्र पे, अटेंशन ऑन सहस्रारा। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर आज के ध्यान में हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। श्री माता जी, by your grace, establish our self-realization and bless us with thoughtless awareness state. कुछ क्षण निशब्द ध्यान में बैठेंगे। We'll sit in silent meditation. इसी ध्यान की अवस्था में हम श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। लेट अस लिसन टू श्री माता जी स्पीच। आज की अमृतवाणी है श्री बुद्ध पूजा 26 मई 1983, ब्राइटन। And he is the one who controls our ego. Because if you have no desire, you will have no ego either. Ego is only built up when you have a desire to do something. That is, you just do it for fun, just for joy, just for doing it. Then how will you build up ego? You cannot. Like an artist is painting just for fun and throwing it up. Creating something just for fun. That's what God is. Not with a desire to achieve something. I mean, the desire is so gross, can be extremely gross. It can become subtler and subtler and subtler. That's a good way. But can be very, very gross also. Like some people can believe that, you see, I should paint it because I'll get so much money. Or I can sell it to somebody who may be the worst man, but I'll sell it because I can get more money. That's absolutely the grossest of all, you see. That you can go to the most sinful things. I mean, I don't know. There can be even worse desires than that. Can be very many. But on this auspicious day, we should not think of them, which are there like that. But minimum of minimum, if we come, just do your puja just for the joy of it, not with any desire. Just for the joy. I mean, we are doing so many things like that.
For example, we enjoy each other's company. Just think of that. We also yogis are enjoying each other's company. What's this for? Nothing at all. There's no nothing. Just we are enjoying it without any desire. Just for enjoyment's sake, enjoyment. When that purity comes, you see, in our temperament, that we do everything without any desire, we have got rid of our ego. The Buddha is awakened within us. And that's what is the importance of Buddha. That he settled down himself in a place which is the most difficult place. That is on the left side of your head, you see. Sometimes I have seen it projects here up to this part, in some people. They get such a terrible pain, pulling it out from there. Can't imagine. So this horrible point, which is so funny, it is sometimes it can blow up like that. You see, sometimes it can pierce through. It's a horrible one, which all of you have developed quite a lot, you see. And it takes its forms in different ways and methods. For that, we have to say, Buddham Sharanam Gacchami. Means we surrender ourselves to Buddha. Then what does he say? The second one is very good. Sangham Sharanam Gacchami. I surrender myself to collectivity. Sangham. Sangha is the collectivity. I surrender myself to collectivity. Ego goes down. First of all, Buddha, who is sitting, who is the deity, which is the enlightenment, you say, I surrender myself to Buddha. Secondly, you say, I surrender myself to collectivity. Egoistical people cannot surrender. So, I surrender myself to collectivity. So, we say, Sangham Sharanam Gacchami. It is to Virat. Virat. It is the third one. Buddham Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. The third one, Dhammam Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Dhamma means the religion, the balance. I surrender myself to religion, which is essence of it. Or you can put it the other way down, that Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. That's all. If you have achieved it, then we can talk of God, not before that. So these three things are to be achieved. We would put it in a Sahaja Yoga way like this. First of all, Dhammam Sharanam Gacchami. I surrender myself to my virtues. All desires can be surrendered to your virtue. Is it virtuous to do like this? You can. If you are brought up that way, you will just not do it. You will have no desires to do something that is not virtuous and righteous. You will just not do it. So, Dhammam Sharanam Gacchami. Then you should say Buddham Sharanam Gacchami, means I surrender myself to my enlightenment. This is the second state when you are ascended. Surrender myself to enlightenment. Enlightenment that I have got to my spirit. It's the spirit who is going to guide. No more my physical, mental, emotional, nonsensical temptations. But what is the spirit? And thirdly, the Sangham Sharanam Gacchami, to the collective, to the whole, to the Virat. This is the way we have to work it out. So ultimately reach the same point, that let me start it from myself. From myself to others, not from others to myself. It's like treating the tree from outside, not from the roots. But Sahaja Yoga treats you from the roots. First you get your realization, alright? Then you learn how to surrender yourself to your dharma. Then you become collectively conscious. Collectivity is a temperament. It's a sense of enjoyment that you get in the collective living. Unless and until you have that, you are not achieved.
So Buddha has played a very great role in our lives, and he is a very great, powerful force within us. I'm very happy that Buddha Jayanti has fallen here in England, because, as we say, the England is the heart of the universe. It doesn't matter if I say here, is there anybody Arab here? I don't want to see any Arab people sitting here. All right. And if it is the heart, whatever you do here will circulate in the whole universe. So if you can conquer your ego here, we can even conquer the ego of Mr. Reagan and these Russians. We can manage that. But first start it here. It has to reverse back. You see, now they have to learn from you and you don't learn from them. When it will work out, you'll be amazed. Ego is the only problem I always face, reaching their hearts. If ego is removed, everything will be all right. So for us, the great mantra is Buddham Sharanam Gacchami. These three mantras you must say every day, I think, to get rid of this horrible ego. Now, any questions on Buddha you have? I've made it in a short way. The whole life history is very difficult. It's receding, ego. English are wise people, sound people. And they must understand this, that it's a very, very important thing, that they should not lose these qualities and should try to fix their enlightenment in such a way that it circulates. Any question? Someone told me yesterday it is Buddha Jayanti. I was very happy. Because in England I have not talked of Buddha, but otherwise I have talked about him elsewhere. So now, that's why I wore, you see, a Buddha shawl. Because it is suggestive of a detached mind which has no color. And there could be a personality which is colorless. But you can have it covered with colors to make others happy. So, when you are a realized soul, whatever you do is natural. Whatever you do. If I am wearing this, now I'm a Buddha. When I take it out, I'm Adi Shakti. It's not a drama. It's a fact. But if you are not a realized soul, before that whatever you do is just a drama. For example, this is an artificial thing. I put my hand there, anything, nothing will burn. But if it is real, it will definitely burn whatever I make of. Like that.
So if somebody is a real person, whatever he does is not a drama, is reality. That's how they say that she can take this form, she can take that form. People don't understand how can one person take so forms. Can. If it is reality, it can. Like the Mother Earth, she is a reality, and the sap that is coming from the Mother Earth takes so many forms. See her power. Flowers, this wood, different colors, fragrance, so many things. This one Mother Earth is producing all these. Because she's reality. The reality in her can produce. But unreal things, whatever you make out of unreal things, they may be real. But they are not. So now let us have the puja. And for the rituals also he said, because most of them were unrealized souls in those days, that they whatever puja they did was unreal. It was not real. Had no meaning. It was giving no effect. See, worshipping a person who is unreal, or any deity who is unreal, or those who were not real people, the realized souls. What's this of unrealized people worshipping? I mean, I would not allow any unrealized person to worship me at all. You see, I always tell people, unless until they are perfectly Sahajogis, you know them, they are good, please don't bring them for puja. It's troublesome to me, much more than to them. You see, they also feel obliged, as if, you see, they are obliging me. They think so, by worshipping me, I don't know. But they don't know how much they are troubling by coming here without realization. So the ones who haven't got realization are really troublesome. They don't help. So the myth some people have that if they come to a puja before realization, they'll get realization is not true. Should not bring anyone who is not a realized soul or who's not a Sahajogi to a puja. It's troublesome, and that person also starts doubting this, that. It's better not to do such a thing, because also such a person is half-baked. So no use giving me half-baked cakes and spoiling the half-baked cake also permanently. Because if you take out a half-baked cake, see, it's spoiled forever. I can't eat it, nor you can bake it again. So what's the use of bringing somebody who is half-baked? Alright? So from next time, also this is out of compassion you do it. I know you do it out of compassion. But this is not wise. It doesn't help me, nor it helps others. Alright? So from next time, also any time, you must find out a circular saying that unless and until you are sure about the realization of a person that is got a realization, you should not call them for the puja. They are no good for mother, and they are not good for themselves. Because they become, you see, doubting or something. You cannot really give them realization after that. You remember your friend had the same problem. Who was he? Nick or something. Alright. So now we can, Kavin, you can do the Ganesh Puja.
आरती की तैयारी करते हैं. विल प्रिपेयर फॉर आरती. आरती के लिए खड़े होते हैं. विल स्टैंड फॉर आरती. सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, माँ कितने लिए अवतार, विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको, बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, मानव में अवतर के कर दिया उजियारा, माँ कर दिया उजियारा, कलियुग में माया है, कलियुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता, इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी,
शीश झुकाकर वंदन करेंगे और निशब्द ध्यान में बैठेंगे. We'll bow down to Shri Mataji and sit in silent meditation.
जय श्री माता जी। श्री माता जी के श्री चरणों पर प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज श्री बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विश्व के सभी भाई बहनों की ओर से आपके श्री चरणों पर हृदयपूर्वक प्रणाम। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारे अंदर का अहंकार पूर्णतया नष्ट हो, प्रेम, करुणा तथा क्षमा का धर्म हमारे अंदर प्रस्थापित हो, हमें क्षमाशील तथा त्यागी व्यक्तिमत्व प्रदान करे। श्री माता जी, हमारे व्यक्तिमत्व से, आचरण से सहयोग की महानता संपूर्ण विश्व में फैले, सारे विश्व का कल्याण हो, यही आपके श्री चरणों पर विनम्र प्रार्थना। श्री माता जी, यदि हमसे कोई जाने अनजाने गलती हुई हो तो कृपा कर हम अजान बालकों को क्षमा कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी प्रार्थनाओं का स्वीकार कर हमें आशीर्वादित करें। श्री माता जी, आपके श्री चरणों पर हमारे कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। Her Holiness Shri Mataji, today on the auspicious occasion of Shri Buddha Purnima Puja, we on behalf of all the Sahaji brothers and sisters offer our humble and heartfelt salutation at your holy lotus feet. Her Holiness Shri Mataji, with your divine grace and blessings, may our ego be destroyed. Let the innate relation of love, compassion, and forgiveness be established within us. Give us a compassionate personality at all times. May our behavior and personality reflect Saha's life so that your message spreads everywhere. May whole world get the divine blessings. This is the prayer at your holy lotus feet. Shri Mataji, in today's pujan, if knowingly, unknowingly, we have committed any mistakes, then please forgive us as your innocent children. We offer our deepest salutation at your holy lotus feet. जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन लेंगे, विल टेक कलेक्टिव बंधन। तुझे रूप पाहुनिया, तुझे रूप पाहुनिया, मी दंग झालो आई तुझे रूप पाहुनिया, मी दंग झालो तुझे नाम घेता घेता
मी धन्य झालो तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो तुझे रूप पाहुनिया तुझे रूप पाहुनिया मी दंग झालो आई तुझे रूप पाहुनिया मी दंग झालो तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो तूच माऊली अमुची तुझ्या सावलीत आलो तूच माऊली अमुची तुझ्या सावलीत आलो तुझ्या चिंतनी रंगुनी समाधिस्थ झालो तुझ्या चिंतनी रंगुनी समाधिस्थ झालो तुझ्या चरणाची धूळ कपाळी मिळालो तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो निर्मल स्वरूप जणू प्रकाशाची ज्योत निर्मल स्वरूप जणू प्रकाशाची ज्योत निरानंदाची तू आणि प्रेमाची डोर निरानंदाची तू आणि प्रेमाची डोर आम्ही मोठ निर्मल स्वरूप जणू प्रकाशाची ज्योत निरानंदाची तू आणि प्रेमाची डोर निरानंदाची तू आणि प्रेमाची डोर ह्या अर्पणाने आई जणू अमृत मी प्यालो तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो कुणी म्हण लक्ष्मी तुला कुणी म्हण साई कुणी म्हण लक्ष्मी तुला कुणी म्हण साई म्हण लक्ष्मी तुला कुणी म्हण साई कुणी म्हणे साई साई कुणी म्हणे साई कुणी म्हणे साई साई कुणी म्हणे साई कुणी म्हणे लक्ष्मी तुला कुणी म्हणे साई कुणी म्हणे सरस्वती आम्ही म्हणू आई कुणी म्हणे
धन्य झालो तुझे नाम घेता घेता मी धन्य झालो मी धन्य झालो आई मी धन्य झालो. नमो बुद्धदेवा नमो बुद्धदेवा नमो शान्तिदूता नमो बुद्धदेवा नमो शान्तिदूता नमो बुद्धदेवा नमो शान्तिदूता तुम्हारे शिवन्दन तुम्हारे शिवन्दन नमामि शरणं नमामि शरणं नमो बुद्धदेवा नमो शान्तिदूता नमो बुद्धदेवा नमो शान्तिदूता. करुणेचा सागर असावे हे जीवन करुणेचा सागर असावे हे जीवन क्षमाशील करुणा दिला मंत्र कायम क्षमाशील करुणा दिला मंत्र कायम नमो बुद्धदेवा नमो शान्तिदूता नमो बुद्धदेवा नमो शान्तिदूता. त्यागी सहज योगी निर्मल असावा त्यागी सहज योगी निर्मल असावा नुरे तो अहंकार सर्व गुणांचा नुरे तो अहंकार सर्व नमो बुद्धदेवा नमो शान्तिदूता नमो बुद्धदेवा नमो शान्तिदूता. दयावंत योगी महापुण्य राशि दयावंत योगी महापुण्य
राशि बुद्धं शरणं नमामि शरणं बुद्धं शरणं नमामि शरणं नमामि शरणं नमो बुद्धदेवा नमो शान्तिदूता नमो बुद्धदेवा नमो शान्तिदूता तुम्हारे चिवन्दन तुम्हारे चिवन्दन नमामि शरणं नमामि शरणं नमो बुद्धदेवा नमो शान्तिदूता नमो शान्तिदूता नमो शान्तिदूता बुद्धं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि आ आ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्ध की जीवनी को सुनो तुम सुनो ये कहानी भली जन सुनो मन सुनो बुद्ध की जीवनी को सुनो तुम सुनो है कहानी भली जन सुनो मन सुनो बुद्ध की जीवनी को सुनो तुम सुनो है कहानी भली जन सुनो मन सुनो चला जग में क्यों है दुख ये सारा खोजने चला नहीं की आशा कोई छूटे संगिनी पुत्र रे भाई दुखिया कंठक शोक में छन्ना त्याग कथाएं तुम सुनो बुद्ध की जीवनी को सुनो तुम सुनो है कहानी भली जन सुनो मन सुनो मन संकल्प था निश्चित दुख मिटाएगा सारे सारे सुख देगा उसको जो भी है पीड़ा के मारे ध्यान समाधि पर वो बैठा धन कनन की छाओ में डर न कोई हिंस्र पशु से तूफानों के सायों में बन गया तनवास्ती पंजर परसों की तपस्या में गया के वन में पीपल के नीचे कहा हटो बुद्ध की जीवनी को सुनो तुम सुनो मैं कहानी भली जन सुनो मन सुनो क्षण क्षण प्रति क्षण श्वास
पूनम की वो चांदनी रात, रंग बहारों का बरसा, अंग संस्कृति से परे प्राप्त नया एक नम्र प्रकाश। वही दो आंखें चांद और सूरज, उनके ज्ञान के द्वार सब अचरज, सिद्ध वो धनी बन गया ज्ञानी, बुद्ध हो गया तब सुनो बुद्ध की जीवनी को सुनो, तुम सुनो है कहानी भली, जन सुनो मन सुनो बुद्ध की जीवनी को सुनो, तुम सुनो है कहानी भली, जन सुनो मन सुनो बुद्ध की जीवनी को सुनो, तुम सुनो है कहानी भली, जन सुनो मन सुनो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो